1978 में कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान सर्जन की मिस्टेक की वजह से चार्ली मंगर नाम के एक शख्स की आंख सर्जिकली रिमूव हो गई थी। अब हुआ क्या, मंगर थे और नंबर्स मैन। प्रोबेबिलिटी मैथ में उनको ट्रस्ट था। उनको पता था कि 5% प्रोसीजर्स में ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मंगर ने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और डॉक्टर को ब्लेम करने से रिफ्यूज कर दिया। Like, look at this clip from the Daily Journal meeting in 2022. Want to have reasonable expectations and take life's results, good and bad as they happen, with a certain amount of stoicism. This stoicism यानी वो फिलॉसफी जो सिखाती है सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशंस पे काबू रखना। थिंक अबाउट इट, कोई मेरी आंख गलती से रिमूव कर देते, आई वुड फ्रीक आउट। लेकिन इन्हीं क्वालिटीज के तहत चार्ली मंगर बने दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर्स में से एक। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली खबर आई है कि 99 की एज में ही पास्ड अवे। तो आई थॉट उनकी डेथ को क्यों मोर्न करना, लेट्स सेलिब्रेट हिज लाइफ। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन हमारा दिल मंगर मोर। Hi, I'm Arunima and welcome to another episode of Viral Reacts. आज हम देखेंगे some of the most iconic pieces of advice by this legendary investor. After all, ये Berkshire Hathaway, one of the most renowned investment firms के वाइस चेयरमैन थे। कंपनी की सक्सेस मंगर की इंस्पिरेशन, विजडम और पार्टिसिपेशन की बदौलत है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वॉरेन बफेट, नाम तो सुना होगा, दोनों साथ में बने फाइनेंस वर्ल्ड के करण अर्जुन। बफेट मंगर की जुगलबंदी ने बर्कशायर हैथवे के बिलियंस वर्थ ऑफ क्यूमुलेटिव अर्निंग्स को जनरेट करी थी। आज की तारीख में बर्कशायर हैथवे का मार्केट कैप ऑलमोस्ट $800 बिलियन टच हो चुका है। इन्वेस्टिंग की नॉलेज तो थी ही, लेकिन मंगर जी बड़े मजाके भी थे। तो लेट्स डाइव इनटू हिज इन्वेस्टिंग फिलॉसफी एंड लाइफ लेसन्स। शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से। Our way of thinking, all intelligent investment is value investment. Because why would you want to buy something which wasn't worth as much as you were paying for it? And who wouldn't like buying something for less than it's worth? So the only difference when people talk about value investing, you're always a value investor. Now there are various ways to look for value investments, just as there are various places to fish. And if the first rule of fishing is to fish where the fish are, the first rule of value investing is to find some place to fish for value investments where there are a lot of them. And of course, it's gotten hard in the United States to find easy value investments because the world is so competitive. And that accounts for a lot of what you see in Berkshire, where we buy securities like Apple that we wouldn't have bought in the old days when we had more mundane things that were serving us very well. So we're just looking in different places, but we're value investors. And so some people, when they say value investor, they mean somebody that emphasizes working capital or something, meaning you should fish in that particular place. But I think that's all. I think it's a bad use of the language to think there's a difference between value investing and other good investing. All good investing is value investing by definition. And so there are just various places to fish for value investments. And of course, as the world gets tougher, you have to fish in places you didn't fish before. Exactly this. Fish in places where you didn't fish before. How epic is that? इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझते हैं। चार्ली मंगर बेसिकली कह रहे हैं कि जहां मार्केट में वैल्यू नजर आ रहा है, वही इन्वेस्ट करना लॉजिकल है। जाहिर है कि आप किसी भी चीज के लिए ओवर पे नहीं करना चाहेंगे, राइट? लेट्स से आपको 100 रुपए की कोई चीज मिल रही है, आप चाहेंगे कि 70 रुपए में मिल जाए, क्योंकि वही इंटेलिजेंट तरीका है मार्केट में बार्गेन ढूंढने का। और अगर आपको बार्गेन नहीं मिल रहा, तो जैसे मंगर ने अभी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बताया, एप्पल जैसे क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही सेंस की बात है। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद अक्सर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेकर परेशान रहते हैं। क्या दिसंबर में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को हाई करेगी? अमेरिका और यूरोप में स्लो डाउन आने पर क्या हमारी कंपनीज पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? कमेंट्स में हमारे साथ जरूर बताइए।
अब अगर आपने कमेंट कर लिया हो तो जानते हैं कि मंगर ने किस तरह अपने फेवरेट स्टॉक कोको कोला को लेकर एक सिमिलर क्वेश्चन को रिप्लाई किया. दिस इज फ्रॉम द बर्कशायर हैथवे के 1999 एनुअल मीटिंग. I have a question regarding Coca-Cola. The first part is, are you worried that the earnings of Coca-Cola might continue to be affected by the weakness in the emerging markets and the strength of the dollar over the next few years? And the second part is on the PE ratio of Coca-Cola at 35 times earnings. Are you worried about the potential rise in interest rates? And is it linked to your views on inflation that you are not worried about the rise in interest rate? Thank you. What matters to you is what you think Coke is going to look like 10 years out or even further out. You don't really pay much attention to short-term economic developments in this country or that, or currency rates or any other such thing. They don't really help you in making the 10 or 15-year projection, and that's the one we're making. So we have tuned out all this noise, as it's called in what communications networks. Tune out the noise, and if you look at the big picture, we think Coke is fine. The big picture. This exactly this. जब भी चीजें डगमगा रही है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, just tune the noise out and look at the bigger picture. क्योंकि अगर आपने बिजनेस मॉडल पे थरो रिसर्च की है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगते हैं आपको, तो याद रखें बड़े बड़े कंपनीज में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. लेकिन फुल डिस्क्लेमर, ये कोको कोला या कोई भी कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है. नाउ इन्वेस्टिंग फिलॉसफी तो ठीक है, एक तरफ है, पर क्या ये थीसिस हमेशा 100% प्ले आउट होता है? नहीं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट का भी स्ट्राइक रेट 100% नहीं होता. तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चेक आउट दिस क्लिप. We got into better and better companies, and we understood more and more of the bad things that could happen to you and how easy they could creep in. And we avoided them even more assiduously when we were old than we did when we were young. And it all worked. Again, what a gem of an advice. जैसे बोलते हैं अपनी गलतियों को सीख कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है. मंगर ने काफ़ी कम शब्दों में बहुत गहरी चीज़ कही है. उन्होंने अपनी अर्ली एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए, एंड वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कंटिन्यूसली कैलिब्रेट करते हैं ताकि चीज़ें ब्लो अप ना हो जो कि खराब बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से हो सकती है. फिर क्यों ना उन्हें लार्ज पाइल्स ऑफ कैश पर भी बैठना क्यों ना पड़े. I think back in 2015, for the 50th anniversary of Berkshire, you wrote in the shareholders letter that, among many other things, you had a $60 billion pile of cash at that point. You thought that pile of cash would decline over time because you'd be able to buy more and more things. Now you've got almost $160 billion in cash. Is there an opportunity for a really big purchase with that? And do you think you'll see one? Well, of course, there's an opportunity for a purchase a lot bigger that people can make who don't have 160. Now, here's my favorite part about Munger, उनकी no nonsense attitude. In fact, Buffett ने तो उन्हें the abominable no man का भी nickname भी दिया था. यकीन नहीं होता? ये क्लिप देखिए. In fact, you can argue that if you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50% 2 or 3 times a century, you're not fit to be a common shareholder, and you deserve the mediocre result you're going to get. Ouch! That personally hurt. बट आई गेस ये सच भी है. अगर आप मार्केट क्रैश के दौरान ठंडे दिमाग से नहीं सोच पा रहे, यानी एक्वानिमिटी से अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन तो बनता है. आस्क योरसेल्फ, क्या डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना वाकई में मेरे लिए है? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मंगर के टूथ बॉम्ब्स. अब बैक टू इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी. देखते हैं चार्ली मंगर का ये वीडियो जहां वो कहते हैं कि आपको आइडियली स्टॉक कब सेल करना चाहिए. Well, you're talking to a great exit. My Berkshire I bought in 1966. I cost I've been a good picker, but other people know more about exiting. I'm trying never to have to exit. So you're talking to the wrong. I think there's working styles of investments that work well with constant exits.
It just hasn't happened to have been my forte. So I'm no good at exits. I don't like even looking for exits. I'm looking for holes. Think of the pleasure I've got from watching Costco march ahead. Such an utter meritocracy, and it does so well. Why would I trade that experience for a series of transactions that make me a little... First place, I'd be less rich, not more, after taxes. The second place, it's a much less satisfactory life than rooting for people I like and admire. So I say find Costco's, not good exits. यार ही इज बीइंग सो ऑनेस्ट. आई लव इट. वो तो कह ही रहे हैं आई एम रियली बैड एट एग्जिट्स. और एग्जिट करना उनके लिए इतना ट्रांजैक्शनल है. वो तो अपनी कंपनीज को सही मायने में सपोर्ट करना चाहते हैं. बफेट और मंगर की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कुछ ऐसी है कि वो तगड़े बिजनेसेस को सही वैल्यूएशंस पे पकड़ते हैं और जहाँ तक उन्हें लगता है कि वो बिजनेस में कोई खराबी नहीं है वो उसे होल्ड करते हैं. ट्रस्ट मी, दिस साउंड्स वे ईजियर देन इट एक्चुअली इज. बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए टू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस. आपको क्या लगता है? डू यू अग्री? कॉमेंट बिलो. फाइनल क्लिप. आई थॉट थोड़े लाइफ लेसन्स के साथ एंड करते हैं. If I know a person's role model, I can pretty well tell what kind of a person he is and what kind of a future he has. There is no reason also to look only for living models. The eminent dead are in the nature of things some of the best models around. And if it's a model is all you want, you're really better off not limiting yourself to the living. Some of the very best models have been dead for a long time. ओके, थोड़ा डार्क था बट हाउ ट्रू. रोल मॉडल चाहिए तो अपने आप को लिविंग बीइंग से क्यों सीमित रखें? हम सभी स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट के लिए फॉर एग्जांपल चार्ली मंगर से बेटर कुछ ही रोल मॉडल होंगे. चलो मैं आपको उनसे जुड़ी एक स्टोरी बताती हूँ. एट द एज ऑफ 31 चार्ली मंगर ने अपने 9 साल के लड़के को ल्यूकीमिया से खो दिया था और उसके तुरंत बाद ही फर्स्ट वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया था उनका. इस डिवोर्स के बाद वो नियरली बैंकरप्ट हो चुके थे एज उनकी वाइफ को उनकी ऑलमोस्ट सारी वेल्थ एलिमनी के तौर पर दी गई थी. लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी में आगे बढ़ते गए. इनफैक्ट डेथ के समय उनका एस्टिमेटेड नेटवर्थ $2.6 बिलियन था. आखिर ये हमें क्या सिखाता है? यही कि कभी भी विक्टिम ना बने और सेल्फ पिटी में अपने आप को खो ना दे. भले ही कितनी डिफिकल्टीज ना आए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहे. ऑन दैट नोट वी रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो. ये था हमारा ट्रिब्यूट टू अ लाइफ वेल लिव्ड. मेरी तो आपके लिए यही टिप है कि आगे कभी भी फाइनेंस या इवन लाइफ से जुड़ी कोई भी डाउट्स हो, कम बैक टू दिस वीडियो, गो थ्रू हिज एडवाइस. आई एम श्योर थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी. वेल दैट्स अ रैप देन. ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.